Next point is the mechanism of electrocatalyst. So for the bonding and surface structure accept of electrocatalysis, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, सरफेस के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को, किसी मेटल सरफेस के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को या किसी मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रोकैटालिसिस के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ सम व्हाट observed sort of way in order to make electrocatalysis a little more real. If would be helpful to go through in example that of the catalysis of the evolution of oxygen. Example is a oxygen evolution from alkaline solutions into substance called O2 का इवोल्यूशन होगा, और इस इवोल्यूशन को हम किस पर करेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशंस पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे ऑन टू सबस्टेंस कॉल्ड perovskites. Such material are given by the journal formula. मटेरियल का जर्नल फार्मूला क्या होगा, फार्मूला RTO3, where R is the rare earth element, where R is equals to rare earth element, such as lanthanum. Again T is equals to transition metal, such as nickel. In the electron catalysis study, the lattice of the perovskite crystals was replicated with various transition metal, that is nickel, cobalt, iron, manganese, chromium, and R remaining always lanthanum. So figure view of perovskite lattice. अब हम इस फिगर में perovskite lattice की स्टडी करेंगे. This figure is named a systematic model for the active surface of the perovskite in which transition metal B is. This is a bulk surface diagram. This point center A ion is lanthanide, and the dark point is B ion transition metal Mz, and this lactic oxide in and protonated oxide in O2 H plus. This is a reaction surface, electrode surface, and this is a alkaline solutions of OH alcoholic group. So the viewer of Provansky lattice of the course of diagram show the surface of perovskite, and before going any further, the reader so spend sufficiently time comprehending the surface on the electrode reaction to take place, with understanding of the symbol showing where lanthanum transition metal and O are one puzzle in cleared up by diagram. If the journal empirical formula of RTO3, it is not observed how to OH ion in alkaline solution would be able to discharge upon an oxide surface. It would the plotted in graph log I versus metal alkaline solutions.
log I unit is a angstrom per centimeter square. 8 eta is the value is equals to 0.03 volt. Minus 8, this is a decreasing order arrange. Minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, and bond strength calorie per mole 120, 140, 160 and 180. Draw the plot graph is a straight line. This is so is nickel and copper, iron, manganese and chromium. Again, figure name is a current density based on real surface area. Current density real surface area for oxygen evolution on perovskites at over potential eta range 0.3 volt versus metal alkaline strength. The transition metal ion for M in perovskites are indicated with different symbol. Indicated with different symbol. This is a point, this is a triangle, and this is a circle, and this is a triangle. Different indicate with symbol. Other parameter catalyzed. Second is a platinum. Platinum catalyzed is so frequently used in electrode material. प्लेटिनियम को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड मटेरियल के रूप में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कैटेलाइज होता है. थिंक इज मस्ट be the best catalysis. Platinum catalysis is a electrochemical cell is a best catalysis. Platinum is used frequently largely because of its stability and availability rather than its good catalytic power. If does not dissolve highly anodic potential, and it is indeed a good catalyst for some reactions. Are more difficult to buy in suitable wire or platform. Several, however, it is interesting to note that the periodic based on the simple model of describe. Melting point of some refractory element. Melting point some refractory element 0 डिग्री सेल्सियस. लोअर मेल्टिंग पॉइंट प्लेटिनम, इधर हम शो करेंगे लोअर मेल्टिंग पॉइंट प्लेटिनम, और इधर हम शो करेंगे हायर मेल्टिंग पॉइंट प्लेटिनम. सपोज लैंथेनम मेटल को इलेक्ट्रोड तो यूज़ होगा, सभी में इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, प्लेटिनियम कैटेलाइज्ड, और यहाँ पर लैंथेनम लोअर मेल्टिंग पॉइंट 920 डिग्री सेल्सियस. गोल्ड 1003 डिग्री सेल्सियस. पैलेडियम 1550 डिग्री सेल्सियस प्लेटिनाइज्ड. हायर में देखेंगे हम कौन कौन सा आएगा. ऑस्मियम 2700 डिग्री सेल्सियस. टंगस्टन वैल्यू इज 3380 डिग्री सेल्सियस. एंड रोडियम 1996 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट
Catalyzed is a bio electro catalyzed. Best example is enzyme. As the name implies, bioelectrocatalysis refer to a possible use of enzyme as part of an electrode in electrochemical device. Enzyme are catalyzed that act on the chemical reaction way the body work. They have remarkable characteristic. The first of this is their लार्ज कैटेलिटिक पावर. इंजाइम के पास बहुत ही लार्ज कैटेलिटिक पावर होता है. वो केमिकल रेट या इलेक्ट्रोकेमिकल के रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैटेलाइज्ड इवेंट द पर सेकेंड एज द कैटेलिटिकली एक्टिव साइट्स in chemical catalysis. This number may range between 1 and 100. In enzyme catalysis, it range between 1000 and 10 millions. The second characteristic is specific enzyme alpha glucose oxidized catalyzed. This is a substance and this is a enzyme. This is a form of complex. This is a product and release for enzyme. Figure name. The basic of the maintain mechanism of enzyme action. Enzyme action. Only a fragment of the large enzyme. Reaction in which E plus S, rate of reaction K1, ES complex formation. सेकेंड स्टेप ES कॉम्प्लेक्स को K2 कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन में E प्लस न्यू प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोडक्ट में. तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज ऑब्जर्विंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम कैटालिसिस को ऑब्जर्व करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेज. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो अपर पार्ट में प्रोडक्ट फॉर्म चला जाएगा. इज इक्वल टू के वेयर इज अ कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगेन ट्रांसफर फॉर्म ES is equals to E bracket S K E S. Cross multiplication transferred to from a new product and regenerate the enzyme. Regenerate the enzyme. Rate of reaction is equals to K2 in bracket ES is equals to K2 in bracket E and second bracket S.